Yes, sir. Are you comfortable in English or Hindi? In both languages. In both the languages, okay. Let us start with your hobby. Your hobby is spending time with children and cooking, Yes, sir. right? So, what have you learned from children? Sir, once you start empathizing them and start a communication, some very, true facts start coming from their side. For example, sometimes they talk something which is very extraordinary. Mhm. I can narrate a story about it if you want. Go ahead. Yes, sir. I have a cousin in my home, and once I asked him, "Why are you writing with pen?" And he said that because I have grown up now. So this tendency that the children have, that I have to grow up and all, this is very fascinating according to me. Suppose you get into service, Yes, sir. and on the very first day, a child of around, say, 7 years old comes to you with a cup of tea. He's selling tea actually, and he's offering that tea to you in your chamber. How are you going to react to this? So I'll first ask him about his parents' occupation, because at the age of 7 he should be studying in his school, not delivering tea to me. And if there is some economic problem or issues with him, then I'll try to make all sort of possible options so that he can study or she can study and go ahead in his career. Supposing the parents of that particular child says that we are poor, we have got a tea shop, and that's why we are unable to send the child to the school, and that's the compulsion because of which he is selling tea. What will you do? So there are government schemes. For example, government is providing employment to even unskilled, because if his father or mother is unskilled, then he can or she can be skilled. And after skilling or reskilling, they can be given employment. And the child, if we want to educate that child, then I think at least in Bihar, education in primary education is almost free for him or her. So that should not be the issue. Can a child be employed in a tea shop? According to Child Labor Act, contributing to parents' occupation sometimes can be accepted, but if he's not attending the school, and at that time if he's selling tea, then that is not illegal. What is the definition of a child? So definition of child in India varies with the act. For example, under Factories Act, any person below 15 years of age is a child. But if we go with POCSO Act, it is 16. But we have signed the United Nations Convention for Child Right Protection Act, under which, under age of 18, if a person is under the age of 18, then he or she is a child. Okay, what is suicidogenic current? Sorry, sir, We have not heard about it. Tell me, why a person commits suicide? Sir, committing suicide can be both social reason or the personal reason. Since my subject is sociology in optional, we have studied Emile Durkheim, who says that this is a social reason which compels a person for such kind of act. But these days, when there is a lot of capitalism and all, and if we go with Karl Marx, he talks about alienation. There are some personal reasons, just because he or she is getting alienated from the society. That situation compels him or her to go for suicide. So, what you say? Why did Sushant Singh Rajput commit suicide? Was it because of the social compulsion or because of some other reasons? Sir, the CBI or other teams are working on it. I think they have not submitted the final report. But will CBI be able to say that this is because of the social compulsion he committed suicide? Can they say so? Sorry, sir, I have not heard you. Please. Oh, I'm saying that is it possible for the CBI to say that
this person committed suicide because of the social compulsion, social reason? Sir, it is very difficult to say that, because ultimately, if society is responsible, then state also is responsible for that. And being a state organization, it will try to defend the state. So, sir, we should wait for the result, I think. Mm-hmm. Do you think that the conflict theorists, particularly Karl Marx, Dahrendorf, uh, have failed to project the kind of conflicts that we witness today in this society? Sir, it is not correct to say that they have failed. It is all about relevance. Even today, if we talk about Karl Marx, he's to some extent he's relevant, because Marxism differs from society to society. Recently, we have seen in Bangalore an incident of a company where the workers of that company had first they went for a strike, and then they revolted against the owner of the company. So that's what he said once. Why did Marx fail? Sir, he has not failed completely. It's all about his successful theory, which is applied from different societies to society. Yes, we can say that today he is less relevant, but he has not failed, according to me, completely. So where is his success? Sir, we have seen China. China actually has not completely implemented Marxist ideology, but yes, to some extent, it is following the basic thought of Marx. In Soviet or Russia as well, though after 1991 the market has opened up in Soviet or Russia, but still somewhere there is a current regarding that Marxism. Okay, tell me the differences in the opinions regarding a religion in between Emile Durkheim and Malinowski. Sir, Emile Durkheim mostly talks about the origin of religion. He had studied at Trobriand Island in Australia, and he says that if we are worshipping if we are following a religion, or if we are worshipping God, we are indirectly worshipping society, because he says that religion is equal to society. Both of them originated at the same time. And if we talk of Malinowski, he is more of a cultural sociologist, and he says that religion is a part of our culture, and it is more functionalist, if we say about Malinowski. Durkheim was also a functionalist. Yes, he was functionalist, but sir, he talked more about origin kind of thing about religion. But Malinowski is talking about how religion is already there and how it is contributing in uniting people in a community. Okay. What is your take about casteism? Casteism has both negative and positive aspects, according to me. Mm-hmm. Discrimination on the basis of caste is a negative thing, but the previous version of caste, or the earlier version of caste, which is Varna, that is somehow is the basis of division of labor in our society, and that is not that is more positive, according to me. How do you differentiate between preference and reservation system? Are these two the same, or there's a difference between these two? No, they are not same, sir. They are different. Preference is more positive oriented thing. I think. Which particular country has got they are giving preferences, not reservation? Sorry, sir, I have no idea. Okay, right. As a student of sociology, how are you going to apply your knowledge of sociology once you get into this police service? Sir, in sociology, we also study about criminology. Like sociologist, we have studied sociologists like E. Lomborso. He talks about. Do you believe in this theory of E. Lomborso? What did he say about this crime? He talked about born criminals. I mean, the physical appearance of a person is he tried to link the physical appearance of person who looks like a criminal among us. No, according sir. To that theory. Sir, he said that if a person look at us and then tell us. According to his theory. Sir, no one.
No one. Because Sure. sir, he says that if a person is muscular, if he is more darker in color or race. What about the nose and ears? I can't exactly recall, Okay. but yes, Right. sorry. I mean, who said that there's nothing called crime or criminal? Society makes them criminal. Or it is like this: criminal are normal things in an abnormal society. Sir, to some extent, Emile Durkheim, while studying anomy and deviance, he tried to establish this theory that it is all about changing nature of society. During that change, during that transient phase, person may behave anomic, but with time they will come back to the normal position. I think Emile Durkheim tried to establish this relationship. What kind of society we are right now in? Do we have the anomic kind of a situation in our Indian society today? To some extent, I will say yes, we are in anomic situation, because we had feudal society back 1947 or before that. After that, we have tried to open up our economy, and gradually we are moving toward a developed society where the sense of capitalism is more deepening day by day, sir. Okay. Can you crack a joke right now? Yes sir, I can, but in Hindi I'll crack. Yes. सर, एक बार एक पत्नी अपनी पति को सर में तेल लगा रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार बड़ा सर दुख रहा आज। तो पत्नी ने कहा कि तेल लगाने के बाद कि कभी माँ ने ऐसा किया था आपको तेल? तो उन्होंने कहा कि उस समय में सर दुखता ही नहीं था। सौरभ, यस आपका इंजीनियरिंग कब हुआ है? अपनी इंजीनियरिंग करा है ना? यस सर, विच ईयर? 2018 में। 18। विच कॉलेज? गुरु गोविंद सिंह इनप्रस यूनिवर्सिटी से। ओके, कहाँ पे है ये? दिल्ली में। ओके, वेरी गुड। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था? सर, मैंने 2 प्रोजेक्ट किए थे। एक तो मैंने माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक फैन बनाया था, जो थर्मल सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होके अगर गर्मी बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता था। और एक मैंने 3rd ईयर में किया था, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। एक लैन नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी मैंने। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा? यस सर। क्या होता है ये माइक्रो कंट्रोलर, होता क्या है? सर, माइक्रो कंट्रोलर एक तरह का सर्किट है जिसमें कि एक ही पीसीबी पे जनरली हम लोग मेमोरी भी डाल देते हैं। जैसे सर, अगर कोई सिंपल डिवाइस है सर, उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है सर वो कॉस्टली भी आता है और ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए हम लगाते हैं। तो हम कई बार अगर फैन में हम लगा रहे हैं तो कोशिश करते हैं ना कि सर एक ही पीसीबी पे मेमोरी भी आ जाए और हमारा प्रोसेसर भी आ जाए, तो उस केस में हम उसको माइक्रो कंट्रोलर बोल देते हैं सर। ओके। अच्छा, आपने जाइलिंक्स का नाम सुना है क्या? माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है, एक सॉफ्टवेयर है जाइलिंक्स। सुना तो है सर, बट मैं। अच्छा, आपने किस सॉफ्टवेयर पे काम किया था, वो जो लास्ट आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था? सर, वो हमें सिस्को एक कंपनी है सर, मैं उसके साथ इंटर्नशिप कर रहा था, तो उन्होंने ही एक प्रोवाइड कराया था। एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर उस सॉफ्टवेयर का नाम। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो आप एक मुझे ये बताएं कि आपने इंजीनियरिंग करा, ठीक है, और फिर आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रहे हैं? सर, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो एडमिशन के समय तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, बट धीरे धीरे सर मुझे लगा कि ज़्यादा टिंकरिंग नहीं था कॉलेज में, मतलब ज़्यादा रूल बेस्ड चल रहा था सिस्टम। और स्पेशली जब मैं फाइनल ईयर में डीएमआरसी के साथ इंटर्नशिप कर रहा था, तब मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो मुझे लगा कि मैं चेंज करूँगा कुछ। तो मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेशन में है सर, तो एक मैं जानता था एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ज़्यादा बेहतर से, एक लेमैन से, तो मैं इधर शिफ्ट कर रहा था। और वैसे भी सर मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एक रास्ता है ये, अगर आप स्टेट के डेवलपमेंट में और एट लार्ज नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो। आपने एक अभी टर्म बोला कि एक रूल बेस्ड चल रहा था। यस सर। आपकी स्टडीज, तो यहाँ पर सिविल सर्विसेज में भी तो रूल बेस्ड ही चलेगा। यहाँ पर भी तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं इधर उधर आपको हाथ पाँव मारने का, तो फिर आप इसको भी स्किप करेंगे? नहीं सर, यहाँ मुझे लगता है कि आजकल जो सिविल सर्विसेज जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है,
इनोवेशन का स्कोप है यहाँ पे, मैंने देखा है कई बार। जैसे एक छोटा सा एविडेंस मैं देता हूँ सर। जैसे अगर हम बॉटल जो यूज़ करते हैं, पानी की बॉटल, तो जनरली उसको कहा जाता है कि आप क्रश कर दीजिए यूज़ करके, ताकि इसको यूज़ ना कर सके फिर से। लेकिन जब आप उसको क्रश करते हैं तो सर उसको रिसाइकिल करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने एक सिविल सर्वेंट को देखा था, उन्होंने ये सिखाया था कि अगर उसके जो उसका जो कैप होता है, अगर उसको उसके अंदर डाल दें, क्रश ना करें, तो रिसाइकिल हो सकता है और मिसयूज़ नहीं हो सकता सर। तो इनोवेशन का कहीं न कहीं स्कोप ऐसे है मेजर, मतलब जैसे अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने ई-ऑफिस स्टार्ट किया है और कंप्लीटली हमारे डिस्ट्रिक्ट को इलेक्ट्रॉनिक किया है सर। तो मुझे लगता है कि इनोवेशन का स्कोप है आज के डेट में सर सिविल सर्विस में। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बिहार में टूरिज़्म की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताइए, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या हमने उसको एक्सप्लोर करा है या क्या अभी उसमें पोटेंशियल कितना है? सर बिहार एक हिस्टोरिक जगह है, तो टूरिज़्म का स्कोप तो बहुत है। और हमने जैसे अभी हमारे यहाँ थीमेटिक सर्किट बनाया जा रहा है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट बनाया गया है सर, सूफी सर्किट भी बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है और लोग आ भी रहे हैं। फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है टूरिस्ट का। अगर हम कुछ एयरपोर्ट्स को देखें, जैसे गया एयरपोर्ट या दरभंगा एयरपोर्ट। लेकिन कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए हमें, जैसे मिथिला का जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी बहुत सारा टूरिज़्म का स्कोप है, जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है या अंडर एक्सप्लोर्ड है सर। तो अगर उन सर्किट्स में कुछ और ऐड हो जाए सर, तो शायद बेहतर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सर हेल्पफुल हो जाएगा। निश्चित रूप से आपने रामायण सर्किट का नाम सुना होगा। जी सर। कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है बिहार के? सर सीतामढ़ी से, उसके बाद समस्तीपुर से, सर एग्ज़ैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है सर। Sourav, जी सर। you have opted to sociology as your optional subject. Yes sir. How this will help you in your administration? Sir, I think administration also requires better understanding of society. So if if I'm a student of sociology, then I can understand the situation better than any other person, social situation. So being an administrator, it will be helpful for me. Any example from the society which you have learned and you will utilize it in administration? Sir, for example, sorry sir, I can't answer that. Okay. What lessons as a society can we learn from different tribal populations of India? So tribal population of India has rich culture, and their way of life, their tradition is very historic. For example, during the COVID time period, when lockdowns were imposed all over India, tribal population of our country were very comfortable because they already knew about this concept of lockdown, because this is the way they used to save themselves from different diseases, because they sometimes eat raw things and raw animals, so they are more they are more susceptible to the disease. So they were already knowing about this concept of lockdown, so we should learn that from them. So this is related to communication of diseases or self-regulation or regulation at the level of societies. Yes. Anything more? I think there is much to be learned from the society, tribal societies, yes, to the common societies. Can you name some of them? Their way of administration also, because they somehow they believe in democracy. The one who they elect as their head, they work for that person works for them, and we can also learn from them the unity factor, because they always remain united. So these are the things I think we can learn from them. Regarding the status of women. Yes sir. So women are more secure in the common society or in tribal society? Sir, women are, as of today, they are more protected in tribal societies. So anything we can learn in this regard from them? Yes sir, we can learn. For example, we have a tribe called Khasi tribe in Meghalaya. There they follow matrilineage.
where the property of the ancestor goes to the daughter of the house. Okay. So this should be learned from them. Okay. There is a ceremony in India Yes. which is celebrated 2 days after the Republic Day. It's a national program. What's the name of that program? Sir, beating retreat program. Why it's called Beating Retreat? Sir, in that ceremony, all those participants are kind of, we acknowledge their effort for the parade. But exactly I can't say, sir. I'm sorry. There was something special about this year's Beating Retreat. What was that? Sorry, sir. Did you watch that? No, sir. I was the parade part, but not the beating retreating ceremonies. So you watched the parade part. Yes. There was something unique about this year's ceremony. That was also unique in this year's Bihar Day celebrations in Patna. What was that? Sir, one thing, I can take a guess if you permit me. Okay. Sir, there was a women fighter pilot from Bihar named Shivangi Singh, who was leading the Air Force commandant. No, I'm talking about the Bihar Day celebration on the 22nd of March this year. What was something special? Sorry, sir, I can't recall. It was a drone show. Okay, thank you. Chicken. Now tell me, which kind of drones are used in creating different images in a drone show? Sorry, sir, I have no idea about There are different kinds of drone used. Yes, sir. One in shooting, One by in the agriculture police, and all of one that. in agriculture. Yes, sir. That is why specialized kind of drones are used in public functions to create different images Yes. in 3D form. What is that drone called? My question is that. I'm sorry, sir. I can't recall that. Okay. India is rolling 5G this year. Yes, sir. What is 5G? Sir, it is the 5th generation of mobile communication system. We already have seen several other generations in the past, and this is 5th one in the row. And sir, in 5G communication system, we are bringing down some latest technology. For example, we are using multimeter waves this time, and we also are using multiple input, multiple output BTS system. BTS means the base transmission system, and we are also using kind of, sir, antennas called the beam forming antennas in 5G. We are reducing the size of the cell. So I think these are the new innovations in the 5th generation. In terms of downloading speed, how it is different from the 4G or LTE? Sir, First, tell me what is the difference between an LTE and 4G? Sir, LTE in technical term is 3.99G, which means that we have not completely evolved. We are evolving. We have not reached the 4G, but after that we reached to VoLTE, which was complete 4G. After that, there was no scope in innovation in 4G. So this was the difference between LTE and 4G, sir. So in terms of Gbps, what is the range of maximum range of 4G and then 5G? Sir, exact data I can't remember, but I can guess the number. Yes. Sir, I think around 40 Gbps is the range of, up to 40 Gbps is the range of 4G, and in 5G we are increasing that. Up to 40 Gbps is the range of 4G. No, sorry, sir, I can't recall that. Okay. Sourav, you used a word in the start of your interview, true facts. Can you tell me some of the examples of true facts? Sir, true facts. Yes, sir. For example, light travels the fastest. Good. Earth revolves around the sun. So these are examples of true facts. Tell me some of the examples of wrong facts. So wrong fact is, I think
it is the fact which were true in the past, but now it has been falsified. For example, TFR of India was 60 a few years back. But now it is 48. I'm sorry, sir. IMR of India is 48. So the fact has been falsified now. Can facts be true or false? Yes, sir. It depends upon the situation and time. Okay. Yeah. Nice talking to you, Sourav. Yes. I will give you feedback. Just wait for some time. Thank you. Thank you. Thank you. कैसा लगा आपको? सर एवरेज ही था मेरे हिसाब से. अच्छा, इससे पहले आपने यूपीएससी 2 बार दिया है. जी सर. कहाँ तक आपने दिया है? सर मैंने एक बार मेंस लिखा है. नहीं सर. क्या गड़बड़ हो गया आपने? सर मेरे ख्याल में जो GS4 था ना मेरा एथिक्स का जो पेपर है सर, वहाँ स्कोर नहीं हुआ सर. तो मुझे लगता है कि मैं प्रिपेयर भी अच्छे से नहीं कर पाया था सर. इस बार आप दे रहे हैं? सर मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊँगा इस बार. हालांकि मैंने फॉर्म फिलअप किया है, पर शायद मैं ये अटेम्प्ट स्किप करूँगा सर. अच्छा, ठीक है. यू आर ए गुड कैंडिडेट. आपका कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है. यस. मेरे ख्याल से बैठने का जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कमर में हाथ है आपका. बीच में थोड़ा सा. हाँ, ये इट्स गुड. ठीक है. है ना, ये ठीक है. कम्युनिकेशन लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है. आई कांटेक्ट भी ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है, आर्टिकुलेशन भी ठीक है. आई डोंट थिंक बहुत कुछ आपको करने का ज़रूरत है. नॉलेज भी ठीक है. सोशियोलॉजी का तो आपने ठीक ठाक आपने जवाब दिया है. कुछ जगह पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है. यस. वो आपको भी पता है. कुछ वो रिवीजन में अभी मतलब करना थोड़ा सा, क्योंकि सर प्रीलिम्स है अभी तो. हाँ. 67 का तो मैं थोड़ा सा उसको. कोई बात नहीं. आपका इसमें तो थोड़ा सा सोशियोलॉजी में देख लीजिएगा. पर्टिकुलरली जैसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कास्टिज्म के बारे में. जी सर. गुड या बैड जो भी आप बोल रहे थे ना, उस टाइप के क्वेश्चंस में. अदरवाइज ठीक है. आपका बहुत अच्छा है. चिल्ड्रेन का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें आप एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि जो वो हैं आपके चाइल्ड लेबर लॉज जो है उसमें क्लियरली है कि अगर पेरेंट्स अगर उनका अगर चाय का दुकान है, फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स का अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे बच्चा जो है काम कर सकता है अपना, लेकिन स्कूल टाइम के बाद. यस. है ना, ये है बेसिकली. किसी और जगह पे चाइल्ड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड. तो आपको पता ही है पॉलिटी में ही है ये सब चीज़ें. ठीक है. अदरवाइज वेरी गुड कैंडिडेट. सर एक बात. अच्छा सौरभ, मेरे तरफ से एक दो इनपुट था कि जब आप बोल रहे थे ना, उस समय आपका हैंड जो है ना वो मूव कर रहा था. ठीक है, हैंड मूवमेंट था. तो बेसिकली वो ये शो कर रहा था कि आप कुछ मतलब वो क्लास टाइप का एक्सप्रेशन शो कर रहा था, नॉट कि इंटरव्यू टाइप का. ठीक है, वो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा लग रहा था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप का. ठीक है, तो वहाँ पर आप एक बार काम करेंगे. अदरवाइज जैसा सर ने बोला, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं. आई होप कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है. एंड 2-4 फैक्ट्स हैं वो आप थोड़ा फोकस कर लेंगे, जैसे कि रामायण सर्किट तो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है. ठीक है, तो ये सब बेसिक्स है. बिहार में ऐसे भी टूरिज्म के लिए बहुत कुछ है नहीं, अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करा. तो जो है उसको तो कम से कम अच्छे से देखें. और आई थिंक कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चीज़ों को ना, एक छोटा सा कोई भी आपके पास अगर बुक हो आपने आपके इंजीनियरिंग टाइम का, तो एक बार ना गो थ्रू हो जाइएगा. ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंसेज है, तो ये सब पता होना चाहिए. उसमें भी आपका तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो आपने बोला था, लेकिन एक एग्जैक्ट जो होना चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा और आप कर सकते थे. अदरवाइज सारा कुछ बेहतर है. कहीं कोई डाउट नहीं. अभी टाइम भी बहुत सारा है. आप उसको कर लेंगे. ठीक है. सर थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ बिकॉज आप इसी ग्रेजुएट हैं. यस. ठीक है, तो 5G को थोड़ा सा और अच्छे से, इंक्लूडिंग जो आपने GBPS स्पीड बोला वो बहुत आगे. हाँ, मुझे लगा बाद में से कि मैं ज़्यादा बोल गया. है ना. 40 Mbps to 50 Mbps ये 4G की मैक्सिमम लिमिट है. हाँ, वो GBPS मैंने बोल दिया गलती से. यस. और 5G में वी आर ट्राइंग टू बी अराउंड 1 Gbps एंड मोर. यस सर. स्टिल अराउंड 4. LTE इज मच लेसर. आपने बोला ही 3.99. दैट वाज गुड. ड्रोन शो में भी स्वार्म ड्रोन्स, दे आर नोन एज स्वार्म ड्रोन्स. थैंक यू. ये आपसे एक्सपेक्टेड था. रेस्ट
ठीक है, लेसन्स फ्रॉम ट्राइब्स उसका थोड़ा सा और अच्छा। आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो बहुत अच्छा हाँ, वो हाँ, एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जिससे कि आपका इंटरव्यू सिलेक्शन या रिजेक्शन हो सकता है अच्छा। ओनली। तो वहाँ पे सर थोड़ा ने सा आपको एक बार हाँ, hint भी करा था कि हाँ, आप women पे women empowerment yes। की तरफ आप वहाँ पर देखोगे तो वर्क में पार्टिसिपेशन जो है वहाँ पे हम लोग की सोसाइटी से ज्यादा है, तो आप चीजों को ना अपने तरफ पुल बैक कर सकते थे वहाँ पे कि वहाँ पे आपके पास Sorry। opportunity- और नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, अभी तो ठीक है, improvement कोई है। बात नहीं। और ये तो फर्स्ट मॉक है। और दूसरा ट्रू फैक्ट्स, आपने ये लैंग्वेज, इट्स अ वेरी वेरी कैजुअल लैंग्वेज। फैक्ट्स आर ऑलवेज एंड एसेंशियली ट्रू, नेवर कैन दे विल बी रॉन्ग। yes। वो इसलिए उनको फैक्ट्स तभी इसलिए कहते उनको हैं। फैक्ट कहा जाता है। ठीक है, yes। ऑल द बेस्ट। आप Thank you, जरूर क्रैक करेंगे, Thank अच्छे रैंक के साथ क्रैक करेंगे। थैंक यू सर। एक बात मुझे पूछना भी था सर, वो कम्युनिकेशन जो मेरा है, हाँ, ये आपका हैबिट इंटरफेरेंस हो रहा है, फिर से हाँ। आप इस पोज में आ रहे हैं। Sorry। दैट यू विल हैव टू करेक्ट। सर मैं पूछ रहा था कि जो कम्युनिकेशन है तो वो मैं हिंदी में करूँ या इंग्लिश में करूँ, मैं इसको लेके कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्लो मेरा ज़्यादा इंग्लिश में जाता है। ठीक, हिंदी में मैं ट्राई कर रहा था एक दिन घर पे खुद आपस में, तो उसमें रुक जाग के कर रहा था मैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ आपको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। वहाँ पर ज़्यादा नहीं सर, यहाँ बीपीएससी में ज़्यादातर जो आपको ये मिलेंगे ना वो आपको हिंदी में ही क्वेश्चंस पूछेंगे। जी सर। तो उस समय क्या होता है ना कि अगर आप उस समय इंग्लिश में बोलते हैं ना तो थोड़ा सा बहुत हाँ, अच्छा इम्पैक्ट नहीं हाँ, जाता है, एरोगेंस ठीक है? थोड़ा सा दिख हाँ, जाएगा। एरोगेंस दिखता है। तो अदरवाइज फिर भी जैसे कि कोई बाहर के कैंडिडेट हैं तो वो तो इंग्लिश में ही बोलते हैं, ठीक है, उनका रहता है। बट अगर आप कर सकते हो तो हिंदी हाँ, में भी yes। करो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप दोनों लैंग्वेज में बोल सकते हो, देखो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक का जो हम लोगों के पास इनपुट है उसके अकॉर्डिंग की ज़्यादातर जो क्वेश्चंस जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे उसी में आप ट्राई करोगे उसी लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक है। आपका फ्लो दोनों में अच्छा है, दोनों में अच्छा है अच्छा, आपका। कहीं कोई इशू नहीं है, ये सब ठीक है issue ही नहीं। All the best। थैंक यू सर।